क्या आपको पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से जुमले की कितना अक़साम है? सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स जुमले कौन से होते हैं? क्लास का क्या किरदार होता है एक जुमले के स्ट्रक्चर में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस कौन सी होती हैं? ये सब सीखेंगे हम आज के लेसन में। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद साजिद is here and you're watching Dear Teacher. Gentlemen, today we are going to talk about class, types of classes, sentence, types of sentences based on structure, simple sentences, compound sentences, complex sentences, and compound complex sentences. What is a class? Class is a group of words which has one subject and one verb. So there are two must things. There should be the group of words, and another thing is it should have one subject and one verb. It should have group of words. It should have one subject plus one verb. Minimum they should a class should have one verb and one subject. For example, I love. We play. When I was working. So let me check, can we just justify these two conditions for a class? So these are two words, so group of words, condition complete. If we talk about one subject and one verb, one subject and one verb is also there. This is subject and this is verb. If we talk about this is also the group of words. We is subject and play is verb. When I was working, so when I was working, this is also the group of words and it has also one subject and one verb. So the group of words which has one subject and one verb, it is a class. ये क्यों ज़रूरी हैं? क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। क्लासेस की क्या कितना अक़साम है ये हम बात करेंगे अभी। There are two types of classes. क्लासेस की दो अक़साम हैं। I'm going to describe it for you. Principal class. Let me erase it now. Principal class. This is also called main class. Principal class, main class. This is also called independent class. Principal class, main class, or independent class. If the other one is, that is called subordinate class or dependent class. So what is the difference between main class and subordinate class or dependent class? The main difference is that the difference of sense. The class which has complete sense is called principal or main class or independent class. The classes which do not convey complete sense, those classes are called dependent class or subordinate classes. For example, you will just try to understand it by examples. आप इसको example से समझने की कोशिश करेंगे. Some of the examples I am going to write for you now. For example, Ali works hard. For example, while she was going to school, So this is also the group of word, this is also the group of word. But this group of word, Ali works hard, it conveys the complete sense. The complete sense means बात आपको पूरी समझ में आ गई है। While she was going to school, जब वो स्कूल जा रही थी,
this sentence is not conveying complete sense. That is the only reason that we say that this is dependent clause, because this clause relies on another part of the clause. एक और क्लास के ऊपर ये डिपेंड करती है ताकि दोनों मिलकर ये बात वाजे करें. फॉर एग्जाम्पल, while she was going to school, this is not a complete clause and it is not conveying complete sense. No complete sense. इसमें पूरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये कह रही है जब वो स्कूल जा रही थी, then what happened? No complete sense is out there. That is why this is called subordinate clause or dependent clause. इसमें Ali works hard, Ali मेहनत करता है. This conveys complete sense. That is why it is called principal oblique main clause oblique independent clause. Now, moving our third point, that is sentence. I have already described that a sentence is a group of words which starts with a capital letter and ends on a full stop, question mark or sign of exclamation, and it should convey proper meaning. And I have also conveyed that it should be properly punctuated. Capitalization, commas, full stop, sign of exclamation, question mark, all of these things should be taken care of. Alright? So, I have told you about the types of sentences based on function, and I will just share the link with you all people. Now, if I talk about the types of sentences based on structure, they are 4 in number: simple, compound, complex, compound complex. भाई ये कैसे इसका फर्क पता चलता है आपको, ये सब हम सीखेंगे अभी थोड़ी ही देर में. यस, वेरी इजी, इट इज वेरी इजी. सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से? ऑल दोज सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस व्हिच आर प्रिंसिपल, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. बहुत आसान है ना आपके लिए. वो तमाम क्लॉजेस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो और वो सेंस भी दे रही हो, वो तमाम क्लासेस क्या कहलाएंगी? सिंपल सेंटेंसेस. इसका मतलब ये हुआ अली वर्क्स हार्ड, ये क्या है? हमारा सादा सा जुमला है. इस बात को आप ध्यान में रख लें कि ऑल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर योर सिंपल सेंटेंसेस. अली वर्क्स हार्ड, सादिया प्लेज क्रिकेट, अहमद गोज टू स्कूल, वी वर्क हार्ड. सो ऑल दोज सेंटेंसेस व्हिच हैज वन सब्जेक्ट, वन वर्ब, and they give complete sense. All those sentences are called simple sentences. All right? Then sir, what is a compound sentence? इसकी मिसाल तो मैंने आपके लिए बता दी, दोबारा भी दे देता हूँ. is equal to independent और main class. ये आपकी मेन क्लास के बराबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, सादिया डिलीवर्स अ लेक्चर. सादिया, जनाब सादिया एक लेक्चर जो है बच्चों को देती है. तो ये सादा सा जुमला जो है आपका सिंपल सेंटेंस है. अब हम बात करें कंपाउंड की. What is a compound sentence? Compound sentence is a combination of two which clauses? Combination of two independent clauses. It is a combination of two independent clauses. Combination of two independent clauses. They are joined together with the addition of fan voice. Addition of fan voice. fan voice. What is this fan voice? This is the combination of different. This is a combination of different conjunctions. Conjunctions are those words which are used to join two sentences, to classes, and to idioms. They are just going to join two words, to classes, to sentences, and so on. So a conjunction कौन कौन से हैं इसमें यूज होते हैं? वो है fan voice, F A N V O Y S. F stands for
For, A stand for, and stand for, nor, B stand for, but, O stand for, or, Y stands for, yet, S stands for, so. So these are the words which are going to join two independent clauses to make it a compound sentence. Two independent clauses combined together, two main clauses or two principal clauses or two independent clauses combined together by the addition of these combination of the words. These words are called conjunctions. इनसे मिलकर दो जो सादा से जुमले मिलकर एक कंपाउंड जुमला बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना इसको। हम इसकी मिसाल आपके सामने लिखने लगे हैं। हम कहते हैं शाजिया was feeling well. शाजिया was feeling well. शाजिया बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। शाजिया was feeling well. शाजिया बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, but she did not join Shazia was feeling well, but she did not attend the class. So this word but is belonging to this category of conjunctions, and this is a combination of these two independent clauses. Shazia was feeling well. This is a complete sentence and it gives a complete sense. Shazia, she did not attend the class. Shazia did not attend the class. This is also a complete sentence, simple sentence, independent clause as well. So when these two clauses are combined together with the addition of but, this becomes compound sentence. Now, what is a complex sentence? Complex sentence are the categories of those sentences in which one independent plus one dependent clause are joined together by the usage of punctuation. पंक्चुएशन के जरिए ही आप इन दोनों जुमलों को मिलाकर, यानी कि जुमलों को नहीं, एक इंडिपेंडेंट क्लास को और एक डिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसको भी समझना बहुत आसान है। जब आप जुमले बना रहे होंगे तो आपको इसका बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लास कंबाइन टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये किस तरह हो रहा होता है हम आपको बताते हैं। व्हेन, जब शीजा was studying, जब शीजा पढ़ रही थी, she saw a snake, जब शीजा पढ़ रही थी तो उसने एक सांप देखा। So this word when शीजा was studying, ये क्या है? This is one dependent clause. ये किसी एक और क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही है। अकेले ये सर्वाइव नहीं कर सकती, इसको एक और क्लास चाहिए अपने आप को मुकम्मल सेंस पैदा करने के लिए। जब शीजा पढ़ रही थी, देन व्हाट हैपेंड, फिर आगे वो इंडिपेंडेंट क्लास लगा के आपको बात पूरी समझा रहा है। शी सा अ स्नेक, बिकॉज़ दिस शी सा अ स्नेक इटसेल्फ इज अ कंप्लीट और इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास भी और ये मुकम्मल सेंस भी दे रही है। सो दिस इज हाउ व्हेन शीजा वाज स्टडीइंग, जब शीजा पढ़ रही थी, शी सा अ स्नेक व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, आई जस्ट सा माय फ्रेंड आउट देयर, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने वहां पर अपना एक दोस्त देखा। जब हम खेल रहे थे, व्हेन वी हैव बीन प्लेइंग, जब हम खेल रहे थे, वी जस्ट
won the match, जब हम खेल रहे थे तो उसके बाद हमने मैच क्या किया, जीता. So when I was going to school, जब मैं स्कूल जा रहा था, I met an accident, मैं एक हादसे का शिकार हुआ. So all of these sentences in which one is dependent and another is independent clause, and they are joined together by the addition of punctuation like comma. I have used it right here. तो इस तरह के जुमलों को आप क्या कहते हैं, complex sentences. Alright, now moving on, हम आप बात कर रहे हैं what is a compound complex sentence. What is a compound complex sentences? सेंटेंस कौन सा होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास जरूरी होती है, दो कम से कम मेन जो डिपेंडेंट क्लासेस हैं उनका होना जरूरी है. अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल one independent clause is must and two dependent clauses are required to make a compound complex sentence. अब इसकी मिसाल देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी. When Shiza was going to school, जब शीजा स्कूल जा रही थी, so this is which kind of clause it is? Dependent clause. So when Shiza was going to school, जब शीजा स्कूल जा रही थी, she saw her friend, उसने अपने दोस्त को देखा, but she didn't meet her. जब शीजा स्कूल जा रही थी उसने अपने दोस्त को देखा. She saw her friend. This is independent clause, but she didn't meet her. लेकिन वो उससे ना मिली. This is also compound. This sentence becomes compound complex sentence because it has more than two clauses. इसमें मेन बात ये होती है कि इसमें दो से ज्यादा क्लासेस आपस में जोड़कर जुमला बना रही होती हैं. In today's lesson, gentlemen, we have just talked about sentences based on structure. We have discussed about the clauses, how the clauses combine together to make simple, compound, and complex sentences and compound complex sentences. For more videos and updates, just join your hands with us and be connected with this channel, dear teacher. Thank you.